Hi guys, I am Himani and welcome to Reels by Himani's YouTube channel. I hope everyone is doing great. Okay, so today I'm starting a new series which will be more about toddler. So I'll just name this series as a toddler series because I have a 3.5 right now and I actually face a lot of things every day. I have new experiences, I have a lot of things to share. So today I'm starting a new series which is a toddler series. I hope you guys will like it. It will have a lot of informational stuff, it will have a lot of fun stuff, it will have a lot of all the things which we all like more of an experience thing. It will have vlogs and a lot of other things also. So hope you guys like it. And if I talk about today's topic, it's all about fussy eating, picky eaters, mealtime tantrums. It's all about that because I'm sure हम सब बहुत face करते हैं ये सब issues as parents. And so let's begin the video, but before that I would like you to tell that please subscribe to my channel. Here is the subscribe button. Yes, for a while I took a break on YouTube, but trust me, I will be very regular on this because this 2022 is my aim to build more informational stuff and to build and to work upon on my YouTube. So let's begin the video. So firstly, let's just begin with that what a fussy eater is, what a picky eater is. Firstly, I would like to tell you that being a picky eater is completely okay. It's completely normal. It's basically a thing where a child doesn't like the texture, the taste, it can be the color. I have seen काफी सारे बच्चों को color पसंद नहीं आता है. That is what a fussy eater or a picky eater is all about. And I would like to begin the video that it's totally normal for kids to not like a certain food or a certain taste. And it's also normal for the same children to like the thing at one day and dislike the other day. It can be, it's a possibility that वो एक दिन वही चीज़ ज़्यादा खा रहा है, एक दिन वही चीज़ कम खा रहा है. तो all of this comes under fussy eating, tantrums, picky eater, but ये सब कुछ normal है. Now, a lot of people actually ask what is the reason. The reason is not unknown. So the reason can be, some deficiency. It can be a zinc deficiency. It can be as basic as, a kid is not introduced to that food at certain point of time. So the reason can, I think if he's not, is very, anti to one set of food, I think, you can also consult the doctor. But, I have seen that, if there is a zinc deficiency, then there is a possibility that the smell and the taste of the kid is not that developed. That's why he's not liking that food. So there are other reasons also, but there are few these reasons which I found out due to my research. अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं ऐसा होता क्यों है? Why all of this happen? This actually happens because fussy eating is a part of your child's development. There are milestones. It's a way of exploring their environment, and asserting their independence. अब वो इतने independent हो गए हैं, उनको पता है मेरी dislike, like क्या है. So they try to say no and yes to a lot of things. That is where child's development come into place, and that is where his tantrums or his picky eating or his fussy eating comes into place. But as much as I'm saying that it's normal to be a fussy eater, there's also a sigh of relief that with the time, as they go older, they will get better, things will get settled down. As बचपन में हो सकता है आप भी बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं खाते होगे, but अब आप खाते हैं, so it's completely okay. It will get better, but still during these times from the toddler till he maybe turns to teens, in this age gap which is about like 10 to 12 years का जो age gap है, इसमें हम बहुत सारे ऐसे corrective measures कर सकते हैं, and that is what the whole video is all about. So मैंने कैसे किया, while I started researching, there were a lot of things and my own experience also. So मैंने इसको divide किया है 3 part में. The solution is divided into 3, which is 1, 2 and 3. So I will talk about each one of them और उसको detail में discuss करेंगे कि किस तरीके से हम उसको सही कर सकते हैं. So the number 1 is making meal time easier and pleasant. So जो meal time है उसको किस तरीके से हम एक fun session बना सकते हैं. This is what I think the first point is, and pleasant कैसे बना सकते हैं. So अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, I think it whole depends and it all starts with your parents' approach. आपकी approach क्या है towards that meal time is very important. मैंने बहुत बार देखा है that जब भी ऐसे खाना खिलाने का टाइम होता है या मील टाइम होता है, then the parents get really, they get like
anxiety, you know, they have get anxiety issues, they have anxiety issues that, you know, बच्चे को खिलाना है, इतना tension है, मतलब, you know, it's so much of tension which they have. So I will say, just, you know, change this approach. Be a little calm, be really patient, and once, you know, they have started and they have eating, then be appreciative. Be appreciative. I mean, you know, you should just appreciate that, yes, you know, you had your meal time, you've completed one roti, you know, now let's move to some other thing, let's move to food. और इसी बात से मुझे एक्चुअली एक और बात याद आ रही है. होता क्या है, यू नो, हम एज माई, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम एज माई हमने बांध रखा है अपने आप को एक यू नो 10 o'clock breakfast, 1 o'clock lunch, 5 o'clock milk, 8 o'clock dinner. I mean, you know, थोड़ा सा लेट लूज करो. इट्स ओके अगर उसने 10 बजे नहीं खाया है तो 11 बजे खा लेगा. इट्स ओके. सो यू नो, जस्ट लेट लूज ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो एंड डोंट बी स्टर्न ऑन योर सेल्फ एंड द किड, बिकॉज आप अपने साथ इतने ज़्यादा हार्श हो जाते हो एंड हेंस आप बच्चे के साथ भी हो जाते हो. वॉट कम्स नेक्स्ट इज दैट, यू नो, हाउ डू आई मेक इट प्लेजेंट, हाउ डू आई मेक इट फन. The number one thing is no screen time. No screen time, guys. Yes, I know, हमने जब फर्स्ट टाइम उसे इंट्रोड्यूस किया था with maybe solids, तो हमने उसको टीवी दिखा दिया या हमने उसको एक बहुत अच्छा कार्टून दिखा दिया and he got excited और हमने बस वही पैटर्न शुरू कर दिया. बट दैट्स नॉट ट्रू गाइज. आई मीन नो, इससे क्या होता है, इससे डेवलप होती है माइंडलेस ईटिंग. यू नो, दिस इज व्हाट कॉल्ड माइंडलेस ईटिंग. इज जस्ट एज एडल्ट्स वी ऑल्सो डू, राइट. हम अपनी मूवी देख रहे हैं, चिप्स खाए जा रहे हैं. सो अभी वो चिप्स जैसे वो खाए जा रहा है, वैसे ही द किड इज ऑल्सो जस्ट ईटिंग, वॉचिंग टीवी, देयर इज नो कंजम्पशन ऑफ इट, देयर इज नो enjoyment of the meal. उसको पता भी नहीं चल रहा है कि वो खा क्या रहा है, which actually really, you know, in the long run make the kids obese, make the kid have PCOD, things like this, and that also we don't want. Of course, जब वो ऐसा हो जाएगा then we want कि अच्छा आप कम खाओ. अभी toddler है, ज़्यादा खाओ, खाओ, टीवी देखो ज़्यादा खाओ, मोबाइल देखो ज़्यादा खाओ. But then as soon as he grows up, तुम बहुत ज़्यादा खाओ, कम खाओ. Number 2 is you be fun. You as parent need to be fun. है कि आजकल के ज़माने में भी, I know we all have a lot of work. We as parents are boring. Yes, we as parents are boring. So, you know, learn yourself. Games खेलो उसके साथ, puzzles खेलो. आजकल तो इतना कुछ अवेलेबल इन द मार्केट है, उसको स्टोरीज सुनाओ. सो आई थिंक दैट विल बी मोर, यू नो, लाइक अ two-way relation. I think, you know, that relation really matters. So a relation between the child and the kid, the relation with the kid and the food has to be really nice. So I think that's my first point to how to have a, you know, and to improve a fussy eater is to make meal time easy and pleasant. Next point, which is number 2, is give your toddler the independence to eat, independence to regulate their hunger. You know, what happens is that, you know, हम force fit करे जा रहे हैं, but it's not happening, guys. It's really not happening. So what can we do? You know, make them independent, make them realize that, you know, you yourself have made this point, you yourself have made this decision that हाँ, मैं आपने जो बोला कि लंच कर लो, आई डोंट फील लाइक, मैंने मना कर दिया. एंड एज पेरेंट आई सेड दैट ओके, डोंट वेट, लेट्स ईट आफ्टर एन आवर. जब मैं आफ्टर एन आवर लेके आई आपकी मर्जी से, which is the kids, you know, मर्जी, you know, it gives that independence, it gives that sense of responsibility, sense of independence to the child, that yes, I have made this decision. And number 2, you know, which comes within this point, is that, you know, give them healthy food options. What happens is that, you know, once they have 2 to 3 good healthy options, they'll choose that, you know, अच्छा ठीक है, मैंने ये खाना है. What we do is generally हम एक थाली लगाते हैं और हम उसको देते हैं ये फूड खाने में है. We don't give them options only, then how will they be happy? You know, if I force fit you as an individual again and again to हम यही खाओ, so I don't think so. But when we go to a restaurant, when we have so many options, then we tend to eat more. For example, I can give you an example that, you know, I gave him रोटी एंड सब्जी. एक घंटे बाद ही मैंने उसको रोटी सब्जी दी. इट्स अ पॉसिबिलिटी तो उसको नहीं खाना है. मैंने रोटी के अंदर ही मैंने एक गोभी का पराठा बना दिया. आई गिव हिम 2 ऑप्शंस, यू नो, देयर इज रोटी एंड सब्जी एंड देन देयर इज पराठा, वॉट एवर यू वांट टू ईट. देन ही चोज द पराठा ओवर इट बिकॉज शायद उसका मन नहीं था, बट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ देम वाज सेम. सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस.
then I think what else we can do is we can also make them a part of the food process. By that I don't mean कि आप उसको मतलब किचन में ले जाके स्टोव के पास रखो, no I don't mean that, but like मील प्रेप्स हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं आप ग्लास यहाँ रख दो. अगर सैलेड टोस्ट हो रहा है तो सैलेड के ऊपर you can just have salt and pepper. So it makes the kid independent, it makes the kid more involved in this process, and then his inclination towards food also increased then, right? जब मैंने अभी इसका ही बनाया है prep and now I eat, so that role play also makes a little easier for the kids to enjoy the meal time. अब सब बातें तो हो गई हैं. अब इसके बाद जनरली पेरेंट्स व्हाट फेसेस दैट हाउ डू वी ऑफर, हम उनको कैसे न्यू फूड इंट्रोड्यूस करें, राइट? बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ फसी ईटर, वो नहीं खाएगा. सो उसकी तरफ चलते हैं, थोड़े से पॉइंट्स वहाँ डिस्कस करते हैं. नंबर वन थिंग इज जो मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया कि उसको हेल्दी फूड ऑप्शंस दो, उनको ऑप्शंस दो टू चूज, एंड आई थिंक दे विल चूज अमंग. आप दोगे ही हेल्दी फूड ऑप्शंस, एंड इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इज दैट वी एज अ फैमिली नीड्स टू बी टुगेदर, एंड आई थिंक उसके लिए क्या चाहिए, जस्ट थ्रो ऑल द जंक फूड फ्रॉम योर हाउस. उसको पता ही नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में फूड पड़ा है, मेरे घर में चिप्स पड़े हैं, मैं उठा के खा लूँगा. As a collective effort of the family, just throw all the junk from your kitchen and give them healthy food options. Number second is that check the pattern. हो सकता है कि कोई एक certain set of pattern है उसका. It can also be a zinc deficiency, an iron deficiency, कोई sensory issues है, कोई irritability है उसको किसी एक food से, किसी एक food group से. So try and find that pattern and then try and have a solution to it, right? Solution ढूंढने से पहले उसका let's have a reason to it. Let's have understand कि उसका reason क्या है. तो उसका understand करें reason और फिर उसके हिसाब से उसके new food introduce करें. Then what you can do is you can make the food attractive. That's a very very easy one, but that has really helped me. आजकल market में we as parents, as a Gen Z audience and a Gen Z parenting have a lot of options, different shapes, different sizes, different colors. Pasta has a lot of sizes. Whole wheat pasta है, बहुत कुछ available है in the market. So take use of it and try and have and make the food more attractive for the child. नंबर इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि आप उनको फैमिली मील के साथ बिठाओ और उसको पूरा उसका मील मत दो. मतलब अगर आपको पता है कि आपने उसको एक बोल ऑफ दाल खिलानी है, 2 रोटी खिलानी है, उसको हाफ अ रोटी दो, थोड़ी सी दाल दो और उसको बोलो प्लीज़ ईट. अगर वो फिर भी मना करता है तो से ओके विल ट्राई सम अदर टाइम, विल ट्राई अनदर टाइम. सो छोटे छोटे पैटर्न, छोटे छोटे पोर्शन साइज के साथ हम शुरू कर सकते हैं न्यू फूड. अब आते हैं जब हम न्यू फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. जनरली फूड ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं. लाइक देयर आर 5 फूड ग्रुप्स विच इज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, grains and protein. I will do a detailed video on these 5 food groups also. अब इसी 5 food group में से आप उनको कुछ ना कुछ different ऑफर करो. अगर फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ नहीं खा रहा है तो योगर्ट ऑफर करो, एग्स नहीं खा रहा है तो दाल ऑफर करो. सो इस 5 फूड ग्रुप्स को आप लेकर चल सकते हैं और इसी में आप ऑप्शंस उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. इसके साथ साथ एक बहुत ही विच इज़ लाइक अ दादी माँ का नुस्खा है, विच इज़ साथ वाले बच्चे को भी साथ में बिठा के फूड शेयरिंग कराओ. आई विल नॉट से कि कंपेयर करो, हैव मोर फूड शेयरिंग ड्यू टू दिस कोविड. हमारा आवर किड्स आर नॉट दैट सोशल, बट ट्राई एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू फूड व्हेन ही इज़ विद अदर चाइल्ड. मैं नहीं कह रही हूँ कि सब टाइम उसको बिठाओ और उसको अच्छा वो खा रहा है वो नहीं खा रहा. सो डोंट डू दैट, डोंट डिस्क्रिमिनेट एंड डोंट do that, don't compare. But जब कोई न्यू फूड इंट्रोड्यूस कराना है तो उस न्यू एक चाइल्ड के साथ उसको दो एंड इंट्रोड्यूस कराओ. सो स्टिल इफ इट डजंट डू देन इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, डोंट फोर्स हिम. बट इट्स अ टेंडेंसी जब बच्चा जब दूसरे को देखता है साथ वाले को तो लाइक अ पीयर इफेक्ट, ही ऑल्सो टेंड टू ईट इट. So yes, these were my 3 major point areas where I think ये 3 अगर हम try करेंगे within this, हम अगर एक छोटे छोटे steps लेंगे, I think we'll be able to reach somewhere, because I know we all have faced our kids as fussy eater. If I talk about my kid, he's not a fussy eater. He eats, on an average, maybe this is how he is, maybe it's the genes, but there are times जब वो नहीं खाते हैं, जब उसको वही चीज़ जो वो रोज़ खाता है बट उसको नहीं खाना है,
right? So that also categorized under fussy eating only. Okay, so I think every child is a fussy eater because we as adults also have these phases, right? So it's totally okay. What I would say is that let's work towards it. And what a big no is that no bribes and no punishment. उनको प्लीज ये मत बोलो कि आप ये ब्रोकली खा लो तो मैं आपको चॉकलेट दे दूंगी. It's a very wrong approach. Don't bribe them and don't punish them also. अगर आप appreciate नहीं कर पा रहे, it's okay, it's okay, but don't punish them and don't tell them मुझसे बात मत करो and everything. It's okay. He's a he's a very small child. When he has like basic मुझे जो समझ आता है वो ये है कि अगर 6 months तक उसने breast feed किया है and all of a sudden you expect the child to eat everything, it can't happen. It really can't happen. If you have not eaten, for example, non-veg whole your life and all of a sudden मैं बोलूँ कि non-veg खाओ, so it's not easy. I mean, so इसलिए give them time, give them, this is the right note which I started my video also, that it will happen as they grow older. It really will happen. So this was my first video on the toddler series. I hope I'll get back with many other interesting videos and informative videos. So if you have any other requests, you can please comment below, and I'll be really happy if you can share this video with all the moms, because I think we will help each other. And comment also with your experiences. Don't forget to subscribe to my channel, like, share and follow. You can also follow me on Instagram, where I keep on sharing a lot of fun videos, a lot of informative videos. Thank you so much for watching. Bye.